Hello friends, how are you? Welcome to my YouTube channel Secret Success Discovery 2021. Friends, now I have provided amazing video that how you will download your COVID certificate in Pakistan if you are living in foreign with easy steps by paying Mastercard, credit card, or other sources. I will see you complete procedure on computer screen. So if you have not subscribed my channel, so subscribe and press the bell icon so latest notification receive in future. दोस्तों मैं अपने चैनल सीक्रेट सक्सेस डिस्कवरी 2021 में आपको खुशामदीद करता हूं। दोस्तों आज मैं आपके लिए ऐसी अमेजिंग वीडियो लाया हूं जिसमें आप कोरोना सर्टिफिकेट इजी तरीके के साथ आप घर में बैठे हासिल कर सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान में हैं तो पाकिस्तान में जो कैश इजी पैसा के साथ डाउनलोड कर सकते हैं पेमेंट करके। अगर आप फॉरेन में हैं तो मास्टर कार्ड, क्रेडिट कार्ड यूज करके आप इजी तरीके के साथ आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह की और नोटिफिकेशन आपको फ्यूचर में मिलती रहे। आइए दोस्तों आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पे कंप्लीट प्रोसीजर बता रहे हैं। सबसे पहले आपने गूगल में जाना है और उधर जाके सर्च करना है इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम आ जाएगा और आप इसको सिलेक्ट करें और आगे कोविड सर्टिफिकेट आ जाएगा, उसको सिलेक्ट करके आपने इसमें आईडी कार्ड अपना लगाना है। Friends, first of all you will go to Google Chrome and search immunization program. There will be displayed immunization program, so click immunization program. Here is COVID vaccination certificate. In this column you will enter your ID card. And this will be same, and in this column you will put your issue date of your NIC card when you have issued your card from Nadra. Here you will put the code. You will collect, you will add both, and here you will enter total. After searching this, as it is says that your NIC is not correct, so you correct your NIC number. Then 3 plus 4 will be 7. After, in this bar there will be displayed columns first dose and 7 dose. So if you do that 1 dose, so
collect one dose form and code. If you do the two dose, there will be below bar of second dose appear in this bar. So after you will select this. Here you will put your name. In this column you will enter your postcode. In this bar you will enter your country. Then click here. Here are two payment methods, credit card. If you are in foreign, so you select credit card and then select this. Here will appear confirmation that I have read. Select this and accept and continue. So this page will be displayed after you will put your credit card number and CVC in this column code, and in this column you will put your expiry of card, your month, a year, and in this column you will put your name and first year and second year. In this column you will put your email address, and in this column you will put country and state, province of your country. In this city, district or division, you will put your postal code of your district. So you will find in Google Chrome what is our postal code. Here will appear postal code. You will see airport. This is your postal code. Then you will copy and here you will paste, and in street put here in the street. Here you will back side of your card, credit card back side, there is right CVC code in 3 figures. You will put here, and postal code is street and confirm and pay you select. So if you are living in your country, so you will select payment method of you will choose the second method. Here you will enter your issue date,
month and year after you collect them total and select. After this column you select this and write your name. In this column passport number, and in this column your country, then select this. After if you are in your country, so select this method. Here is the tracking number where you have sent the payment. You can send payment with JSCash, Easy Pesa easily on Nadra site. Oh, now I am going to send payment by Nadra by Easy Pesa method. When you send by Easy Pesa JSCash, you will send tracking number and then select after payment, select this. After your name will appear and then select and check your name, is it correct? After select this. And you can download, this is card size and this is certificate. Okay, here's appeared your cert card and here will appear your certificate. Now they did not uploaded, after they will upload and I will download. Okay, thanks. दोस्तों, मैं अपने चैनल सीक्रेट सक्सेस डिस्कवरी 2021 में आपको खुशामदीद करता हूं। दोस्तों, आज आपको हम सिखाएंगे कि आप कैसे कोरोना सर्टिफिकेट घर बैठे हासिल कर सकते हैं इजी तरीके के साथ। तो आइए कंप्यूटर की स्क्रीन पे देखते हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह की और टेक्निकल वीडियोस आपको फ्यूचर में मिलती रहे। तो आइए आपको दोस्तों कंप्यूटर की स्क्रीन के आपको सारा प्रोसीजर बताएंगे। सबसे पहले आपने गूगल में आना है। गूगल में आने के बाद आपने गूगल लगा के इधर इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम सर्च करना है। ओके, ये आपके सामने आ गया। जब ये सामने आ जाएगा तो ये बार आ जाएगी इस तरह नादरा की, तो आपने इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने ये सर्टिफिकेट का लिखा हुआ है कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट का हुसूल। अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए तो इस कॉलम को सिलेक्ट करें। रिकॉर्ड में दुरुस्त की करनी है तो इसको सिलेक्ट करें। सर्टिफिकेट की तस्दीक करनी है तो इसको सिलेक्ट करें। ये सारे ऑप्शंस हैं जो आपको चाहिए। अगर आपको सिर्फ सर्टिफिकेट चाहिए तो इसको सिलेक्ट करें। इसके बाद आपने अपना NIC नंबर डालना है। इसके बाद ये वैसे ही रहना है और इसके बाद आपने इस कॉलम में आपके शनाख्ती कार्ड जब आपका इशू हुआ था वो डेट आपने डालनी है। ये डालना है या मंथ सिलेक्ट करना है। इसके बाद ये डेट लगानी है। ये सारी आ गई आपके सामने और ये इनको दोनों को प्लस करना है।
1 और 4 5 हो गए। तो आपने तस्दीक करनी है बाद में। उसके बाद ये कह रहा है आपका शनाख्ती कार्ड नंबर दुरुस्त आपने नहीं लगाया, तो आपने दोबारा दुरुस्त कार्ड लगाना है। ओके, फिर इनको टोटल करना है। टोटल करने के बाद तस्दीक करें, उसके बाद दूसरा कॉलम खुल जाएगा। अगर आपने पेमेंट कर दी है तो आपके सर्टिफिकेट का ऑप्शन आ जाएगा, अगर नहीं की तो आपका पेमेंट मेथड आएगा। तो आप ये कार्ड साइज डाउनलोड कर सकते हैं या सर्टिफिकेट बड़ा जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद ये सर्टिफिकेट डाउनलोड होगा। ओके दोस्तों, तो अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप मुझे कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, भूलना